ओम नमः सिद्धेभ्यः। क्या करते हैं? ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की जय। अभी प्रातःकालीन वेला में चातुर्मासिक प्रतिक्रमण पूर्ण किया है। अब आषाढ़ सुदी या 14 है। आगम के अनुरूप वर्षा युग की स्थापना आप लोगों की भावना को देखते हुए की जा रही है। भक्तियों के पाठ के साथ लगभग ये आधा घंटा लगेगा। संकल्पित होना है मुझे। आप लोगों को क्या करना है ये आपका विषय है। और इसका निष्ठापन दिवाली के दिन होगा। एक एक दिन चातुर्मास के निकलते जाएंगे, ये भी ध्यान में रखना है। अभी यहाँ पर भक्तियों का पाठ करके वर्षा युग के विषय में कुछ आगम के अनुरूप आप लोगों के सामने विचार रखा जाएगा। अथ वर्षा युग स्थापन वेलायां शुद्ध भक्ति कायो सर्गम करोमि। सिद्धानुभूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्मस्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्धे तदनुपम गुण प्रग्रहाकृष्टितुष्ट सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गुण गणोच्छादि दोषापहाराद योग्योपादान युक्त्या दृषद इयता हेम भावोपलब्धि नाभाव सिद्धिरिष्टा न निजगुणहतिस्तत्तपोभिर्नयुक्तेः अस्त्यात्मानादिबद्धः स्वकृतच फलभुक्तस्य यान्मोक्षभागे ज्ञाता दृष्टा स्वदेह प्रमितिरूपसमाहारविस्तारधर्मा द्रव्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयति तो नान्यता साध्यसिद्धि सत्वन्तर्बाह्य हेतु प्रभव विमल सद्दर्शन ज्ञानचर्या संपद्येति प्रगातक्षतदुरिततया व्यंजिता चिन्त्यसार्यै कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रवर सुख महावीर्य सम्यक्त्वलब्धिर्ज्योतिर्वातायनादि स्थिर परम गुणै रद्भुतैर्भासमान जानन् पश्यन् समस्तं सममनुपरतं संतृप्यन्मितन्मन् धुन्मन्ध्वान्तं नितान्तं निचितमनुपमं प्रीणयन्निशभावं कुर्वन् सर्वप्रजानामपरमभिभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा
आत्मन्नेवात्मनासो क्षणमुपजनयन् स स्वयं भूप्रवर्तः चन्दनशेषान्निकलबलकली स्थैरनन्तस्वभावैः सूक्ष्मत्वाग्र्यावगाः गुरुलघुगुणैः क्षायिकैः शोभमान अन्यश्चान्यव्यपोह प्रवणविशेषसम्प्राप्य लब्धिप्रभावै रोर्बं रज्जा स्वभावात् समयमुपगतो धाम्नि सन्तिष्ठते गृहे अन्याकाराप्तिहेतुर्न च भवति परो येन तेनाल्पहीन प्रागात्मोपातदेह प्रतिकृतिरुचिराकारे वय्यमूर्तः क्षुतृष्णाश्वासकाशज्वरमरणजरानिष्टयोगप्रमोह व्यापत्यादुग्रदुःखप्रभवभवहतेः कोशसौख्यस्य माता आत्मोपादानसिद्धं स्वयमतिशयवद्वीतवादं विशालं वृद्धिरासव्यपेतं विषयविरहितं निप्रतिद्वन्द्वभावम् अन्यद्रव्यानपेक्षं निरुपमममितं शाश्वतं सर्वकालमुत्कृष्टानन्तसागरं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातं नार्थक्षुद्रुड्विनाशात् विविधरसयुतैरन्नपानैरशुच्चा नास्पृष्टैर्गन्धमालैर्नहि मृदशैनैर्ग्लाननिद्रादिभावात् आतङ्कार्तेरभावे तदुपशमनसद्भेषजानर्ततावद् दीपानर्तकिवद्वा व्यपगततिमिरे दृश्यमाने समस्ते तादृक्सम्पत्समेता विविधनयतपस्संयमज्ञानदृष्टे चर्या सिद्धा समन्तात् प्रविततयस्सो विश्वदेवादिदेवाः भूता भव्या भवन्तः सकलजगति स्तूयमाना विशिष्टैः स्तान् सर्वाणौपिनन्तान् निजगमिशुरं तत्स्वरूपं त्रिसन्ध्यं कृत्वा कायोत्सर्गं चतुरष्टदोषविरहितं सुपरिशुद्धम् अतिभक्तिसंप्रयुक्तो यो वन्दते सो लघुलभते परमसुखम् इच्छामि वन्ते शुद्धभक्ति कामसो को तत्सालोच्यं सम्मनान संसर्जुत्वानम् अट्टवेकमिमुखानमट्टगुणसम्पन्नानम् उड्डुलोय मध्यमे पैठ्यानं तौ शुद्धानं नैशुद्धानं संयम शुद्धानं चरिशुद्धानम् अधीतनागतवर्तमानकालत्ते शुद्धानं सौ शुद्धानं सैनिचकालमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखकौकमकौ वोयुलाौ सुगै गमनं समाय मरणं जनुगुणसम्पत्तिहोदमध्यम् अथ वर्षायोगस्थापनवेलायां श्रीमद्योगिभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। जाति जरोग मरणातुरशोक सहस्रदीपिता दुस्सह नरक पतन संत्रस्त दिया प्रतिबुद्ध चेतस जीवितमंब बिंदु चपलम तडिदभ्रसमाविभूतय सकलमिदं विचिन्त्य मुनय प्रशमाय वनान्तमाश्रिताः व्रतसमिति गुप्ति संयुताः शमसुखमाधाय मनसि वीतमोहा ध्यानाध्ययन विसंगताः विशुद्धये कर्मणां तपश्चरन्ति दिनकर किरण निकर संतप्त शिलानिशयेषु निस्पृहा मलपटलावलिप्ततनमशिथिलीकृत कर्मबन्धनाः व्यपगतमदन दर्परति दूषकषाय विरक्तमत्सराः गिरिशकरेषु चण्डकिरणाभिमुखस्थितयो दिगम्बराः सज्ञानामृतपायैः क्षान्तिपय शिच्यमानपुण्यकायैः धृतसन्तोषच्छत्रकैः तापस्तीव्रोऽपि संयते मुनीन्द्रैः
शिखिगलकज्जलालिमलिनैर्विबुधादिपचापसृत्यचित्रितैः भीमरवै विसृष्टचण्डाशनशीतलवायुवृष्टिभिः गगनतलं विलोक्य जलदैः स्थगितं सहसा तपोधनाः पुनरपि तरुतलेषु विषमासु निशासु विशङ्कमासु ते जलधारा शरताडिता न चलन्ति चरित्रतः सदा नृसिंहा संसारदुःखवीरवः परीशहारातिघाति न प्रवीराः अविरतबहलतुहिमकणवार्विरङ्घ्रिपपत्रपातनैः रणवरतमुक्तसातकाररवै परुषैरथानिलैः शोषितगात्रयष्टयः ये श्रमणाधृतिकम्बलावृताः शिशिर्निशां तुषारविषमां गमयन्ति चतुष्पथे स्थिताः इति योगत्रयधारिण सकलतपशालिन प्रवर्धपुण्यकायाः परमानन्दसुखैषिण समाधिमग्नं दिशन्तु नो वदन्ताः गिम्मे गिरिशिरथा वरिसायालेरुक्कमूलरैणीषु शिशिरे वाहिरसैना ते साहु वन्दिमो नित्यं गिरिकन्दरदुर्गेषु ये वसन्ति दिगम्बराः पाणिपात्रपुटाहारास्ते यान्ति परमां गतिम् इच्छामि बन्ते युवती कावसुकोदसालोचिम् अड्ढायजिदि उदो सुमदेषु पन्नारसकमभूमिषु आदावनरुक्कमूल अभ्भुवासठानमून वीरास नेकपासु कुकुडासुन चौचपक्खौणादियोगयुक्तानं सौसौनं शयनिष्कलमञ्चमे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखकौकमको भूयिलाओ सुगैगमनं समायमरणं जनुगुणसम्पत्तिहूतमध्यम् अथो वर्षायोगधारणवेलायां श्रीमद् चैतभक्तिकायो सर्गं करोम्यहम्। श्री गौतमादिपदमद्भुतपुण्यबन्ध मुद्योतिताखिलममोघ मघप्रणामं वक्षे जिनेश्वरमहं प्रणिपत्य तथ्यं निर्वाणकारणमशेषजगद्धितार्थं येति भगवान् हेमाम्बोजप्रचारविजृम्भिता वमरमुकुटच्छायोद्गीर्णप्रभापरिचुम्बितौ कलशोहृदया मानोद्भ्रान्ता परस्परवैरिण विगतकलुषापादो यस्य प्रपद्य विशस्वसु तदनु जयति श्रेयान् धर्मप्रवृद्धमहोदय भूति विपतक्लेशाद्योषो विपाशयति प्रजाः परिणतिनय शाङ्गीभावाद् विविक्तविकल्पितं भवतु भवतस्त्रात्रित्रिधा जिनेन्द्रवचोऽमृतं तदनु जयिता जैनीवित्ति प्रभङ्गतरङ्गिनी प्रभव विगमद्रव्यस्वभावविभाविनी निरुपमशोकस्येदं द्वारं विघट्य निरर्गलं विगतरजसं मोक्षं देयान् निरत्ययमव्ययम् अर्ह सिद्धाचार्यो स्वाध्यायेभ्यस्तथा च साधुभ्यः सर्वजगद्वन्देभ्यो नमोऽस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः मोहादिसर्वदोषा ऋघातिकेभ्यः सदा हतरजोभ्यः विरहितरस्कृतेभ्यः पूजारेभ्यो नमो हृद्भ्यः क्षान्त्यार्जवादिगुणगण सुसाधनं सकललोकहितहेतुं शुभधामनिधातारं वन्दे धर्मं जनेन्द्रोक्तं मिथ्याज्ञानतमोव्रत लोकैकज्योतिकमितरं योगी
सांगोपांगमजेयं जैनं वचनं सदा वन्दे भवन विमान ज्योतिर्व्यन्तर्नलोकविश्वचैत्यानि त्रिजगदभिवन्दितानां त्रेधा वन्दे जिनेन्द्राणां भुवनत्रयेऽपि भुवनत्रयाधिपाभ्यर्चितीर्थकर्तॄणां वन्दे भवाग्निशान्ति विभुवानामालयालिस्ताः इति पंचमहापुरुषा प्रणुता जिनधर्मवचन चैत्यानि चैत्यालयाश्च विमलां दिशन्त बोधिं बुधजनेष्ठाम् अकृतानि कृतानि च प्रमेदितिमन्ति द्युतिमत्सु मन्दिरेषु मनुजामदपूजितानि वन्दे प्रतिबिम्बानि जगत्त्रये जनानां द्युतिमण्डलभासुराङ्गयष्टि प्रतिमा जनोत्तमानां भुवनेश विभूते प्रवृत्ता वपुषा प्राञ्जलिरश्मिवन्दमान विगतायुधविक्रिया विभूषाः प्रकृतिस्था कृतीनां जनेश्वराणां प्रतिमाग्रहेषु कान्त्या प्रतिमा कल्मषशान्तये विवन्दे कथयन्ति कषाय मुक्तिलक्ष्मीं परया शान्ततया भवान्तकानां प्रणमाम्यभिरूपमूर्तिमन्ते प्रतिरूपाणि विशुद्धये जनानां यदिदं मम सिद्धभक्तिनीतं सुकृतं दुष्कृतवर्तमरोदिति न पटुना जनधर्म एव भक्तिर्भवता जन्मनि जन्मनि स्थिरा मे अरतां सर्वभावानां दर्शनज्ञानसम्पदां कीर्तयिष्यामि चैत्यानि यथा बुद्धिविशुद्धये श्रीमद्भवनवासस्था स्वयं भासुरमूर्तय वन्दिता नो विधेयासु प्रतिमाः परमां गतिं यावन्ति सन्ति लोकेऽस्मिन् न कृतानि च तानि सर्वाणि चैत्यानि वन्दे भूयांसि भूतये ये व्यन्तर्विमानेषु स्तेयांस प्रतिमाग्रहा ते च संख्यामतिक्रान्ताः सन्तु नो दोषविच्छेदे ज्योतिषामतलोकस्य भूतयेद्भुतसम्पदः ग्रहा स्वयंभुवः सन्ति विमानेषु नमामि तान् वन्दे सुरकिरीटाग्रमणिच्छायाभिषेचनं या क्रमेणैव सेवन्ते तदर्शाः सिद्धिलब्धये इति स्तुतिपतातीत श्रीभृतामर्यथा मम चैत्यानामस्तु संकीर्ति सर्वाश्रवनिरोधिने अर्हन्महानदस्य त्रिभुवनभव्यजनतीर्थयात्रिकदुरितं प्रक्षालनैककारण मतिलौकिककुहकतीर्थमुत्तमतीर्थं लोकालोकसुतत्व प्रत्यवबोधनसमर्थदिव्यज्ञान प्रत्यवहत्प्रवाहं व्रतशीलामलविशालकूलद्वितयं शुक्लध्यानस्तिमित स्थितराजद्राजहंसराजितमस्कृत स्वाध्यायमन्द्रघोषं नानागुणसमितिगुप्तशिखता सुगमं क्षान्त्यावर्त्यसहस्रम् सर्वदयाव्यकचकुसुमविलसल्लतिकं दुःसपरिशहाख्यं द्रुततररङ्गतरङ्गभङ्गुरनिकरं व्यपगतकषायफेनं रागद्वेषाददोषशैवलरहितम् अत्यस्तमोहकर्दम मतिदूरनिरस्तमरणं मकरप्रकरं ऋषिवृषभस्तुतिमन्द्रो दृगितनिर्घोषविविधविहगद्भाणं विविधतपोनिधिपुलिनं सास्रवसंवर्णनिर्जरानिस्रवणम् गणधरचक्रधरेन्द्र प्रवृत्तिमहाभ्यर्च भव्यपुण्डरीकै पुरुषै बहुभिः स्नातं भक्त्या कलिकलुषमलापकर्षणार्थममेयम् अवतीर्णवतः स्नातुं ममापि दुस्तरसमस्तदुरितं दूरं व्यवहर्तु परमपावन मनन्यजय्य स्वभावभावगभीरम् अताम्रनयनोत्पलं सकलकूपवह्निर्जयात् कटाक्षचरमोक्षहीनममिकारतोद्रेकत विषादमदहानितः
प्रहसितायमानं सदा मुखं कथयतीव ते हृदयशुद्धिमात्यन्तिकीं निराभरणभासुरं विगतरागवेगोदयात् निरम्बरमनोहरं प्रकृतिरूपनिर्दोषत निरायुधसुनिर्भयं विगतहिंसाक्रमात् निरामिषसुतृप्तिमद्विविधवेदनानां क्षयात् मितस्थितनकाङ्गजं गतरजोमलस्पर्शनं नवाम्बुरुह चन्दनप्रतिमदिव्यगन्धोदयं रवीन्द्रकुलिशादिदिव्य बहुलक्षणालङ्कृतं दिवाकरसहस्रभासुरमपीक्षणानां प्रियं हितार्थपरिपन्थिभिः प्रबलरागमोहादिभिः कलङ्कितमनाजनो यदपि वीक्षशो शुध्यते सदामिमुखमेव यज्जगति पश्यतां सर्वतो शरद्विमलचन्द्रमण्डलमिमोथितं दृश्यते तदेतदमरेश्वरप्रचलमौलिमालामणि स्फुरत्किरणचुम्बनीयचरणारविन्दद्वयं पुनातु भगवज्जनेन्द्र तव रूपमन्धीकृतं जगत्सकलमन्यतीर्थगुरुरूपदोषोदैः मानस्तम्भासरांसि प्रविमलजलसत्खातिका पुष्पवाटी प्राकारो नाट्यशाला द्युतयमुपवनं वेदिकान्तर्ध्वजाद्याः चालकल्पद्रुमाणां सुपरिवृतवनं स्तूपहर्म्यावली च प्राकारस्फाटिकोत्तर नृसिंहमुनिसभापीठिकाग्रे स्वयंभू वर्षेषु वर्षान्तरपर्वतेषु नन्दीश्वरीयानि च मन्दिरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जुनपुङ्गवानाम् अवनितलगतानां कृत्रिमानां वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानां ये मनुजकृतानां देवराजार्जितानां जनवरनिलयानां भावतोऽहं स्मरामि जम्बूदादके पुष्करार्धवसुधा क्षेत्रत्रये ये भवान् चन्द्राम्बोजशिखण्डिकण्टकनकप्रावृड्घनाभाजिनाः सम्यग्ज्ञानचरित्रलक्षणधरा दग्धाष्टकर्मेन्धना भूतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जनेभ्यो नमः। श्रीमन्मेरुकुलाद्रौ रजतगिरिवरे शाल्वलो जम्बवृक्षे वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकरुचुके कुण्डले मानुषाङ्के ईश्वाकारेञ्जनाद्रौ दधिमुकुशकरे व्यन्तरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके विवन्दे भुवनमैतले यानि चेत्यालयानि देवासुरेन्द्रनरनाग समर्चितेभ्यः पापप्रणाशकर भव्यमनोहरेभ्यः घण्टाध्वजादिपरिवारविभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजनालयेभ्यः इच्छामि वन्ते चैवते कांसोकोदसालोचयम् अलोयतिर्लोयोड्डुलोयं मे किट्टिमानि जानजनि चेयानि तानि सुवानि त्रिशूलुवेषु भवनवासी वानमिन्द्रज्योसे कपुवासयति चौव्यहा देवा सपरिवारा दिव्येन नानेन दिव्येन गन्धेन दिव्येन अख्येन दिव्येन पुष्पेन दिव्येन चूर्णेन दिव्येन दीवेन दिव्येन धुव्येन दिव्येन वासेन नित्युकालमर्चन्ते पूज्यन्ते वन्दन्ते नमंसन्ते अहमवे सन्तो तत्सन्तायं सैनिचकलमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखकौ कमकौ भूयिलाौ सुगयगमनं समाय मरणं जनुगुणसम्पत्तिभूतमध्यम् अथ वर्षायोगधारणवेलायां श्रीपञ्चमहागुरुभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम्।
श्रीमदमरेन्द्रमुकुट प्रकटितमणिकिरणवारिधाराभि प्रक्षालितपदयुगलान् प्रणमामि जिनेश्वरान् भक्त्या अष्टगुणे समुपेतान् प्रणष्टदुष्टाष्टकर्मरिपुसमितीन् सिद्धान् सततमनन्तान् नमस्करोमीष्टतुष्टिसंसिद्ध्यै साचारश्रुतजलदीन् प्रतिर्शुद्धोरुचरणनिरतानाम् आचार्याणां पदयुगकमलानि ददे शिरसि मेऽहं मिथ्यावादिमदोग्र भान्तप्रध्वंस्यवचनसन्दर्भान् उपदेशकान् प्रपद्ये मम दुरितादिप्रणाशाय सम्यग्दर्शनदीपप्रकाशका मे बोधसम्भूताः भूरिचरित्रपताका स्ते साधुगुणास्तु मां पान्तु जनसिद्धसूर्यदेशक साधुवरानमलगुणगणोपेतान् पञ्चनमस्कारपदयेत्रसन्ध्यमभिनौमि मोक्षलाभाय येष पञ्चनमस्कार सर्वपापप्रणाशन मङ्गलानां च सर्वेषां प्रथमं मङ्गलं भवेत्। अरः सिद्धाचार्योपाध्याया सर्वसाधव कुर्वन्तु मङ्गलाः सर्वे निर्वाणपरमश्रियं सर्वान् जनीन्द्रचन्द्रान् सिद्धानाचार्यपाठकान् साधून् रत्नत्रयं च वन्दे रत्नत्रयसिद्धये भक्त्या पान्तु श्रीपादपद्मानि पञ्चानां परमेष्टिनां लालितानि सुराधीश चूडामणिमरीचिभिः प्रातिहार्यर्जिनान् सिद्धान् गुणैः सूर्येण स्वमातृभिः पाठकान् विनयैः साधून् योगाङ्गैरष्टभिः स्तुवे। इच्छामि वन्ते पञ्चमा गुरुभक्ति कांसोकोदसालोचन अट्टमा पाणिहिरसंयुक्तानम् अर्हन्तानम् अट्टगुणसम्पन्नानम् उड्डुलये मध्यमे पैठ्यानं सिद्धानम् अट्टपोवेनमौ संयुक्तानम् आयर्यानम् आयारादि सुम्राणुपदेशानम् वज्झायानम् तिरयनगुणपालरयानं सौसानं सैनिष्कलमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमंसामि दुःखकौकमकौ वोयिलाौ सुगैगमनं समायमरणं जन्गुणसम्पत्तिभूतमध्यम् अथो वर्षायुगधारणवेलायां श्रीमत्साध्यभक्तिकायो स्वर्गं करोम्यहम्। न स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचय संसारघोरार्णवः अत्यन्तस्वरदुग्ररश्मिनिकरव्याकीर्णभूमण्डलो ग्रीष्मकारयतीन्दुपादसलिल छायानुरागं रविः क्रुद्धाशिर्विशदष्टदुर्जयविषज्वालाबली विक्रमो विद्याभीषजमन्त्रतो यः वनैर्याति प्रशान्तिं यथा तद्वत्ते चरणारुणाम्बुजयुग स्तोत्रोन्मुखां नृणां विघ्नाकाय विनायकाश सहसा शाम्यन्त्यहो विस्मयः संतप्तो तम कांचन क्षितिधर श्रीस्पर्धे गौरद्विते पुंसां त्वच्चरणप्रणामकरणात् पीडाप्रयान्तिं क्षयम् उद्यद्भास्करविस्फुरत्करशत व्याघातनिष्कासिता नानादेहि विलोचनद्वितिहरा शीघ्रं व्यथा शर्वरे त्रैलोकेश्वरभङ्गलब्धविजया दत्यन्तरोद्रात्मकान्
नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलति यकेन विधिना कालोग्रदावानलान् नश्याचेतव पादपद्मयुगल स्तुत्यापगावारणं लोकालोकनिरन्तरप्रवितत ज्ञानैकमूर्तेभिवो नानारत्नपिनद्दण्डरुचिर श्वेतातपत्रत्रयः त्वत्पादद्वयपूतगीतरवत शीघ्रं द्रवन्त्या मया दर्पाद्मात् मृगेन्द्रभीमनिनदा ध्वन्यायता कुञ्जराः दिव्यस्त्रीनयनाभिरामविपुल श्रीमेरुचूडामणे भास्वद्बालदिवाकरद्वितिहर प्राणिष्टभामण्डल अव्याबादमचिन्त्यसारमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं त्वच्चरणारविन्दयुगल स्तुत्यैव सम्प्राप्यते यावन्नोदयते प्रभापरिकर श्रीभास्करो भासयन् तावद्धारयति पङ्कजवनं निद्रातिभारश्रमं यावत्त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदय तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत् शान्तिं शान्तिजनेन्द्रशान्तमनस त्वत्पादपद्माश्रयात् सम्प्राप्ता पृथिवीतलेषु बहवः शान्तिर्तिनः प्राणिनः कारुण्यान् मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदैव तस्य गदत शान्त्यष्टकं भक्तितः शान्तिजिनं शशिनिर्मलवक्त्रं शीलगुणं व्रतसंयमपात्रम् अष्टशतार्चितलक्षणगात्रं नौमि जनोत्तममम्बुजनेत्रं पञ्चममीप्सितचक्रधराणां पूजितमिन्द्रनरेन्द्रगणैश्च शान्तिकरं घनशान्तिमभीप्सु षोडशतीर्थकरं प्रणमामि दिव्यतरुसुरपुष्पसुवृष्टिर्दुन्दुविरासनयोजनघोषौ आतपवारणचाबरयुग्मे यस्य विभाति च मण्डलतेज तं जगदर्चत शान्तिजिनेन्द्रं शान्तिकरं शिरसा प्रणमामि सर्वगणाय तु यच्छतु शान्तिं मह्यमरं पठते परमां च ये व्यर्चिता मुकुटकुण्डलहाररत्नैः शक्रादिभिः स्तुतपादपद्मा ते मे जना प्रवरवंशजगत्प्रदीपा तीर्थङ्करा सततशान्तिकरा भवन्तु सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपाल काले काले च सम्यक् कलयतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशं दुर्भिक्षं चौरमारी क्षणमपि जगतां मास्मभ्यो जीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदाये तद्द्रव्यमव्ययमुदेतु शुभस्वदेश सन्तन्यतां प्रतपतां सततं सकाल भावसनन्दतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयं प्रतपति मुमुक्षुवर्गे प्रध्वस्तगातिकर्मान् केवलज्ञानभास्कराः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्या जिनेश्वराः इच्छामि मन्ते सन्ति भक्तिकांसुकोदसालोच्यं पञ्चमाकल्यान् सम्पन्नानम् अट्टमापाणिहेरसय्यानं ज्योतिषादिसेविषे संयुक्तानं 32 देवेन्द्रमणिमयी मौढमत्तमय्यानं बलदेव वासुदेव चक्रहर्षि मुनि यदि अनगारोपगूढानं तुहि सहस्रनिलयानम् उषाय वीर पश्चिम मंगल महापुरुषानं सैनिष्कलमंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुःखकौ कमकौ वोलाओ सुगै गमनं समाय मरणं
जनगुण संपत्ति भूत मध्यम अथो वर्षायुग धारण वेलायाम शुद्ध भक्तिम योगी भक्तिम चैत्य भक्तिम पंचमा गुरु भक्तिम शांति भक्तिम च कृत्वा तद्दिनादिकत्वा दोष विशुद्ध्यर्थम आत्म पवित्रीकरणार्थम श्रीमत् समाधि भक्ति कायो स्वर्गम करोमि हम। स्वात्मा विभु संवित्ति लक्षणं श्रुतचक्षुषा पश्यन् पश्यामि देवत्वां केवलज्ञानचक्षुषा शास्त्राभ्यासो जनपतिनुते संगते सर्वदार्यैः तद्वृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनं सर्वस्यापि प्रयेतवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्तां भवे यावदेते पुवर्ग जैन मार्गरुचिरण्य मार्ग निर्वेगता जनगुण स्तुतोमति निष्कलंक विमुलोक्ति भावनाः संभवन्तु मम जन्म जन्मनि गुरुमूले यति निचिते चैत्य सिद्धान्तवार्धि सद्घोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्निसन समन्वितं मरणं जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटि समार्जितं जन्म मृत्यु जरा मूलं हन्यते जनबन्धनात् आबाल्या जनदेवदेव भवत श्रीपादयो सेवया सेवासक्तविनीयकल्पलतया कालोदया वद्गत पां तस्या फलमर्तये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे त्वन्नाम प्रतिबद्धवर्णपठने कंठोस्वत्कुण्ठो मम तौ पादो मम हृदयं तौ पदद्वये लीनं तिष्ठतु जनेन्द्र ताव यावन्निर्वाणसम्प्राप्ति ये कापि समर्थेयं जनभक्तिर्दुर्गतिं निवारयितुं पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिश्रियं कृतिन पंच अरिञ्जेनामि पंचैमधिसायरे जने वन्दे पंचजसोयर्णामे पंचेशी मंदरे वन्दे रयनत्तमं च वन्दे चौवीस जने च सौवदा वन्दे पंचगुरूणं वन्दे चारणचरणं सदा वन्दे अरमित्यक्षरब्रह्म वाचकं परमेष्टिन शुद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिदद्महे कर्माष्टकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्पादिगुणोपेतं शुद्धचक्रं नमाम्यहम् आकृष्टिं सुरसम्पदां विदधते मुक्तिश्रेयो वश्यता मुच्चाटं विपदां चतुर्गतिभुवां विद्वेषमात्मैनसाम् स्तम्भं दुर्गमनं प्रतिप्रयततो मोहस्य सम्मोहनं पायात् पञ्चनमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता अनन्तानन्त संसार संतते छेदकारणं जनराजपदाम्बोज स्मरणं शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जनेश्वर नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति जने भक्तिर्जने 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 दने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे याचेहं जन तव चरणारविन्दयोर्भक्तिं याचेहं पुनरपितामेव तामेव विघ्नौगाः प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगाः विषं निर्विशतां याति स्तूयमाने जुनेश्वरे इच्छामि मन्ते समाधिभक्ति कांसुकोदो सालोचिं रैणते स्वरूप परमपजानलक्षणं समायवते निजकालमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमुंसामि
दुख कौ कम कौ भूलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति होद मध्यम।